Hello, students, and I hope you all are well at home. Stay home, safe home. So today I'm going to discuss with you the another topic, and this is the last topic of the business laws of Unit Fifth: binding up of companies. So meaning of binding up of a company is a process whereby its life ended and it property administered for the benefits of its creator and members. बाइंडिंग अप एक जो कंपनी है बाइंडिंग अप कंपनी जो प्रोसेस एक प्रोसेस है जहां पर कंपनी एंड हो जाती है उसकी लाइफ जो एंड्स होती है और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो जो एडमिनिस्ट्रेड पर्टिकुलरली उसके क्रिएटर्स और मेंबर्स के लिए यूज हो जाती है वाइंडिंग अप इज मींस बाय विच द डिसोल्यूशन ऑफ अ कंपनी इज ब्रॉट about its and its assets is realized and applied in payment of the debts, and after the satisfaction of the debts the balance if any is paid back to the members in proportion of the contribution made by them to the capital of the कंपनी. तो बाइंडिंग अप बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस है जहां डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी कहा जा सकता है इसको, या एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द कंपनी भी कहा जा सकता है, जहाँ पे इसके एसेट्स को रियलाइज किया जाता है और उन एसेट्स से फिर डेट्स के पेमेंट किए जाते हैं. आफ्टर द satisfaction of debts payments then the balance if any paid back to the members proportion. So अगर हो सकता है तो वो दिया जा सकता है then to the capital of the company. An administrator called a liquidator is appointed and he takes control of the company, collect its assets, pay its debts, and finally distribute any surplus among the member in accordance with their rights. तो जो लिक्विडेशन या जो कंपनी की बाइंडिंग अप की जो प्रोसेस है उसमें एक एडमिनिस्ट्रेटर या जिसको लिक्विडेटर भी कहा जाता है उसको अपॉइंट किया जाता है और फिर जो वो सारे कंट्रोल है कंपनी का अपने हाथ में लेता है. देन ही कलेक्ट्स एंड पेज द डेट्स एंड फाइनली distribute the surplus among the members according to their rights. Mode of winding up basically, as per the section 270 of the Companies Act 2013, the procedure for binding up of the company can be initiated either first one is the by the tribunals or second one is voluntarily बाइंडिंग अप. तो दो तरह के बाइंडिंग अप हो सकते हैं कंपनी के, एक तो बाय द ट्रिब्यूनल यानी कोर्ट के आदेश पर, या वॉलंटरी यानी जो कंपनीज है वो अपने से या अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं या जो भी हैं उनको अपने से बंद करना चाहते हैं. The first one is binding up by the tribunals discuss करते हैं. तो as per the Companies Act 2013, a company can be bound up by tribunals in the following mentioned circumstances. In conditions में जो है company tribunals के द्वारा bind up की जा सकती है. First one is when the company is unable to pay its debt. Second one is if the company has by special resolution रिजोल्व दैट द कंपनी बाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल्स. ठीक है, कोई रेजोल्यूशन लाए और उसमें रिजोल्व कर ले कि ठीक है ट्रिब्यूनल्स के द्वारा इसको कहना है कंपनी हैज एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इंटीग्रिटी और मॉरलिटी ऑफ द कंट्री या इंडिया secretary of the state and has spoiled any kind of friendly relation with foreign or neighbors countries, then company may be bound up by tribunals. And if the company has not filled its financial statement or annual returns for preceding 5 consecutive financial year, then company may be bounded by the tribunals. NCTL इसको कहा जाता है, नेशनल कंपनीज ट्रिब्यूनल्स लॉ बोर्ड जो है इसको नाम से जाना जाता है. एंड इफ द ट्रिब्यूनल्स बाय एनी means finds that it is just unequitable that the company should be bound up. अगर ट्रिब्यूनल्स चाहे तो देख सकता है कि अगर कंपनी में जस्ट अनइक्विटेबल कुछ ऐसा मिलता है तो वो उसको बंद कर सकता है. If the company is any way indulged in fraudulent activities or any other unlawful business, any person or management connected with the formation of company found guilty of fraud or any kind of misconduct, then the company may be bound up by the tribunals. Filing up of binding up petition. Section 272 provide that the binding up petition is to be filed in the prescribed form 1, 2, and 3, whichever is applicable, and it is to be submitted in 3 sides in the court. And the petition for compulsory binding up can be presented in the following persons. कंपनी इसको प्रेजेंट कर सकती है, क्रेडिटर्स प्रेजेंट कर सकते हैं, एनी कंट्रीब्यूटर या कंट्रीब्यूटरीज कोई भी हो सकते हैं, एंड सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इसको प्रेजेंट कर सकती है पिटीशन को, बाय रजिस्ट्रार ऑफ द अथॉरिटी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द पर्पस भी इसको बाइंड अप के लिए पिटीशन फाइल कर सकता है. फाइनल ऑर्डर एंड इट्स कंटेंट्स की अगर हम बात करें, ट्रिब्यूनल्स आफ्टर हियरिंग द पिटीशन हैज द पावर टू डिसमिस इट. चाहे तो उसको डिसमिस कर सकता है और टू टेक टू मेक एन इंटरिम ऑर्डर्स
और या फिर interim order से बना कर रख सकता है, and I think fit appropriate or it can appoint the provisional liquidator of the company till the passing of binding up orders. An order for binding up is given, then इफेक्ट ऑफ बाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल्स की अगर हम बात करें, सेक्शन 279 में दिया गया, अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन द ऑर्डर ऑफ बाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी शैल ऑपरेट इन फेवर ऑफ ऑल द क्रेडिटर्स and all the contributories of the company as if it had been made out of just joint petition of the creditors and contributories etc. तो ये इसका इफेक्ट होगा, जो भी सेक्शन 279 के अकॉर्डिंगली जो भी इफेक्ट है कंबाइनिंग ऑफ डाइदर ट्रिब्यूनल्स, जो भी ऑर्डर्स हैं इनके फेवर्स में उनको मिल जाते हैं, और उसके बाद जो है जॉइंट पिटिशन भी डाल सकते हैं. देन सेकंड कैटेगरीज ऑफ बाइंडिंग अप है, वो है वॉलंटरी बाइंड अप ऑफ द कंपनी. कंपनी कैन बी बाइंडेड अप वॉलंटरली बाय द म्यूचुअल डिसीजन ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी. कंपनी के मेंबर्स ही मिलकर कंपनी को बंद करने के लिए अगर इच्छुक होते हैं तो उसको वॉलंटरी बाइंड अप, या जैसे वॉलंटरी रिटायरमेंट होता है एम्प्लॉय का, इसी टाइप से वॉलंटरी बाइंड अप जो है कंपनीज का कहलाता है. क्या कंडीशन हो सकती है? द कंपनी पासेस ए स्पेशल रेजोल्यूशन स्टेटिंग अबाउट द बाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. सेकंड, कंपनी इन इट्स जनरल मीटिंग पासेस ए रेजोल्यूशन फॉर बाइंडिंग अप एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड ऑफ इट्स ड्यूरेशन as fixed by its AOA artificial article 7 or at the occurrence of any such events where the article provide the dissolution of the company. This is a procedure for voluntary binding up. First one is conduct a board meeting with 2 directors and thereby pass a resolution with the declaration given by directors that they are of the opinion that company has no debt or it will be able to pay its debt after utilizing the all procedure and sale of its assets. Second, issue of notice in written writing for calling of general meeting and proposing the resolution along with the explanatory statement. Third is in general meeting pass the ordinary resolution for the purpose of binding up and by ordinary majority of a special resolution by 3/4 of the majority. Then binding up shall be stated and from the date of passing the resolution. Conduct a meeting of creditors after passing the resolution, and if majority is there, creditors are of the opinion that binding up of the company is beneficial for all parties, then the company can be wound up voluntarily. Then fifth point is within 10 days of passing the resolution, file a notice with the registered for appointments of liquidator. Sixth one is within 14 days of the passing such resolution, give a notice of the resolution in the official gazette and also advertise in a newspapers. Seventh is within 30 days of general meeting, file certified copies of ordinary or special resolution passed in the general meeting. Eighth point is bind up affairs of the company and prepare the liquidator account and get the same audited. Ninth point is conduct a general meeting for the company. Eighth is in that general meeting pass a special resolution for disposal of the books and all necessary document of the company when the affairs of the company are totally bound up and it is about to the dissolve. 11th point is within 15 days of final general meeting of the company, submit a copy of account and file an application to the tribunals for passing an order for the dissolution. If the tribunal is of the opinion that the accounts are in order and all the necessary compliances have been fulfilled, the tribunal shall pass an order for dissolving the company within 60 days. ठीक है, तो उसके बाद कंपनी का जो फिर ट्रिब्यूनल्स है वो भी एक ऑर्डर पास कर देते हैं विद इन 60 डेज और कंपनी रिसीव सच एप्लीकेशन, देन द कंपनी में बी डिसॉल्व. The appointment liquidator would then file a copy of or the order with the registrar. After receiving the order, pass the tribunals and the registrar then publish a notice in official gazette. और जो भी जो ऑर्डर पास होंगे ट्रिब्यूनल्स के उनको प्राप्त करके फिर नोटिस जो है न्यूज़पेपर वगैरह में उसको डिक्लेयर करके गजट नोटिफिकेशन या न्यूज़पेपर में भी आप उसको दे सकते हैं. देन कंपनी में भी डिसॉल्व. इफेक्ट्स ऑफ वॉलंटरी बाइंडिंग अप की अगर हम बात करें, सेक्शन 309 में ये दिया गया है. इन that case, a voluntary winding up, the company's help from the commencement of the binding up ceases to carry on its business expect as per as required for the beneficial binding up of its business. ठीक है, तो ये इसका इफेक्ट होता है कि जो पावर्स हैं कमेंसमेंट से लेकर उसके जो भी चीज़ें हों सब कैरी आउट करके बिजनेस को एक्सेप्ट कर दें. कॉर्पोरेट स्टेट एंड कॉर्पोरेट पावर्स ऑफ द कंपनी सेल कंटिन्यू अंटिल इट्स डिसॉल्व. जब तक वो डिसॉल्व नहीं होती तब तक उसकी पावर बनी रहती है. Then appointment of official liquidator according to section 359 for the purpose of this act, so far as it related to the binding up of the companies by the tribunals or by central government may appoint as many official liquidator joint
deputy or assistant official liquidator, and as it may consider necessary to discharge the functions of the official liquidator. The liquidators are appointed under this section and shall be whole-time officer of the central government. The salary and other allowances of the official liquidator, joint official liquidator, deputy official liquidator, and assistant official liquidator shall be paid by the central government. Then the powers and duties of the fish company's liquidator. Power and duties of company liquidator in case of binding of the tribunal. Section 290 में दिए गए हैं. Subject to directors by tribunal, if any. Disregard the company liquidator in the binding up of the company by the tribunal shall have the powers. सभी तरह की powers जो है directors की उनको मिल जाती हैं to carry on the business and the company so far as may be necessary for the beneficial benefit of the company. जो भी वो चाहे वो company के business को run कर सकता है, carry कर सकता है, do to do all the acts and to execute in the name and on behalf of all the company and decide deeds and receipt and other document and the purpose of to use when the necessary the company seal. वो चाहे तो कंपनी के सील उसके पर्पस डॉक्यूमेंट को यूज कर सकता है टू सेल द इम्प्रूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टी एंड एक्शंस claims the company and by the public auction private contract with the power to transfer such property any person or body of corporate sell the same in the parcels. जो पावर्स हैं उसमें लिक्विडेटेड उनकी प्रॉपर्टी जितनी भी प्रॉपर्टीज उनको बेच सकता है. सेल द होल ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनीज एज गोइंग कंसर्न के रूप में भी वो चाहे तो उसको बेच सकता है. टू रेज द मनी रिक्वायर्ड ऑन द सिक्योरिटी ऑफ असेट्स एंड द कंपनी उसको रेज कर सकता है. इंस्टीट्यूट to institute or defend any suit, prosecutions or the other legal procedure, civil or criminal, in the name and on behalf of the company. वो कर सकता है डिफेंड करने के लिए कंपनी को. वो अपने अगेंस्ट पिटिशन या शेयर जो भी कर सकता है या अगेंस्ट लीगल कोर्ट में भी जा सकता है कंपनी के बिहाफ में टू invite and settle claim and of the creditors, employees or any other claimant and distribute and sale procedure in accordance with the priorities established under this act. So there are different functions and duties and powers then he is able to do and draws, accept, make and necessary endorse by any negotiables instruments including the checks, bill of exchange, hundis, promissory note and not in the name and behalf of the company and with the same effect of respect to the availability of the company as if such instrument had been drawn and accepted and made by endorsement by the on behalf of the company and to take out his official name, letter of the administrator and any deceased contributory and to do in his official name any other act necessary for obtaining a payment of any other money due from a contributory or his set and which cannot be convenient and in the name of the company and in the such cases the money due wholesale and for the purpose of funding company and liquidity etc. Then obtaining the professional assistance from any person, appoint any professional discharge of his duties, obligation, responsibilities, and the protection of the assets of the company. Appoint an agent to do any business and which company liquidator is unable to himself. अगर ऐसा होता है तो to take all such actions, like steps or signs, execute, verify any paper, deed, document, application, petition, affidavit, to bond or instrument as may be necessary for binding up of the company, distribution of the assets, इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज ऑब्लिगेशन एंड फंक्शन ऑफ कंपनी लिक्विडेटर. जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो सब चीज़ें उसको जो भी वो कर सकता है चाहे वो किसी वेरीफाई कर सकता है, पेपर्स को साइन कर सकता है, डीड ले सकता है, डॉक्यूमेंट बना सकता है, एप्लीकेशन दे सकता है. वो सारी पावर्स जो है उसको मिल जाती हैं टू अप्लाई to the tribunals of for such orders and action directions as may be necessary for the binding up. Then powers and duties of company liquidator in the voluntary binding up. Section 314 में ये आता है 1314 में आता है. Company liquidator shall perform such function and discharge such duties as may be terminated from time to time by the company and creditors as may be case. Company liquidator shall settle the list of contributories and which shall be prima facie evidence and liability of the persons named therein and contributories. The company liquidator shall also call the general meetings for the company for purpose of the obtaining of sanction of company and by ordinary special resolution as case may be required. Company liquidators shall also maintain the regular and proper books of account in such form and such manner as may be prescribed and the members and creditors and may any authorities and central government may be inspected the books. Company liquidators shall prepare the quarterly statement of accounts in such form manners and which may be prescribed in the particular and quarterly with the registrar and filing with the company liquidator and company may be liquidator pay the debts and company
of the company and shall adjourn the rights of the contributor among themselves. And company directors shall also pay debts of the company and shall adjust the rights of the contributors among themselves. The company liquidators shall observe due cares and vigilance and the discharge of the duties. If the company liquidator fails to comply with the provisions of this section except subsection, and he shall be punishable with the fine with and may be extended 10 lakhs of rupees. अगर कंपनी की तरफ से कहीं कोई दिक्कत आती है तो उसको भी पनिशेबल किया जा सकता है. थैंक यू वेरी मच. आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग अप एंड द appointment of liquidators and their duties and powers and etc. So this is the complete discussion about the Companies Act, Indian Companies Act and other things. I hope you understand. If you have any queries, then ask me. Thank you very much.